Hello. Now again, now we'll take the examples on the last lecture of that substitution method. Okay. So y is equal to first example cos inverse of. अब सब्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंस कितना है आप एक एग्जांपल में देखेंगे. इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है. cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो बहुत सारा लेंथी सॉल्यूशन बन जाएगा. सो व्हाट इज टू बी सब्स्टिट्यूट, दैट इज इंपॉर्टेंट हियर. अगर यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले आपके दिमाग में आएगा साइन पुट करेंगे, cos पुट करेंगे, tan पुट करेंगे. साइन किया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. 1 माइनस sin स्क्वायर अपॉन 1 प्लस sin स्क्वायर, ऐसा कोई भी फार्मूला नहीं है. 1 माइनस cos स्क्वायर अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर, ऐसा भी कोई फार्मूला नहीं है. बट अगर tan पुट करेंगे यहाँ पर 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta, and that becomes cos 2 theta. बाहर cos इनवर्स है तो अंदर cos आ रहा है, तो हमारा जो टारगेट है वो कंप्लीट हुआ है. So here let us substitute here or put here x is equal to tan theta. सबसे इम्पोर्टेंट इज what is to be substitute, क्या पुट करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट. अब वो बात आपके ध्यान में आ गई, दिस आर्टिकल बिकम सो मच इजी. cos इनवर्स ऑफ 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta. It is a multiple angle formula. It is a cos 2 theta. It is only 2 theta. जो पुट किया है वहां पर इसका थीटा फाइंड करिए. अब ये x की जगह पर tan थीटा पुट किया है तो थीटा बिकम्स व्हाट, tan इनवर्स ऑफ x. इट ऑब्वियस थिंग है, x is equal to tan थीटा है तो थीटा क्या होता है, tan इनवर्स x होता है. सो इट इज 2 थीटा. सो व्हाट इज एक्चुअल थीटा, इट इज अ tan इनवर्स ऑफ x. एंड दिस इज व्हाई. अब इसका डिफरेंशिएशन बहुत सिंपल, एक डिफरेंशिएशन की एक स्टेप रहेगी. ऊपर का सब्स्टिट्यूशन मींस पार्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री इज मच इंपॉर्टेंट देन द पार्ट ऑफ डेरिवेटिव हियर. ओके, सो नाउ dy by dx. dy by dx टू कोएफिशिएंट है. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, 1 upon 1 plus x square. So what will be the derivative, 2 upon 1 plus x square. This is the first example of derivatives of inverse trigonometric function by using substitution method. Okay, now second, it is simple as y is equal to tan inverse of 2x upon 1 minus x square. अब साइड में और क्या पुट करना है इसका इमेजिनेशन करो. x की जगह sin पुट करके देखो, cos पुट करके देखो, tan पुट करके देखो, आपको समझ में आना चाहिए. 2 tan थीटा upon 1 minus tan थीटा इक्वल किसका फार्मूला है, tan 2 थीटा. So best way, put here x is equal to tan theta. So therefore theta is equal to tan inverse of x. So this y becomes tan inverse of 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. It is tan 2 theta. Here I got tan 2 theta. Tan inverse tan eliminate, only 2 theta. What is theta, tan inverse of x. Now differentiate with respect to x. dy by dx is equal to 2 into derivative of tan inverse x 1 upon 1 plus x square. अब डेरिवेटिव बहुत इजी बन रहा है बिकॉज ऑफ दिस सब्स्टिट्यूशन. अगर यहाँ पर हम कंपोजिट फंक्शन अप्लाई करेंगे तो बहुत टफ हो जाएगा. tan inverse डेरिवेटिव फिर इसका डेरिवेटिव, इट्स u by v, that becomes too much lengthy. And to avoid the such lengthy calculation, use this substitution. This is the way of substitution. Is it clear? पहला cos inverse का था, दूसरा कौन सा है, tan inverse का है. सबसे important one, what is to be substitute. क्या substitute करना है? देखो example number now third. y is equal to sin inverse of 1 minus x square 2x into under 1 minus x square. जो इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है मैंने लास्ट वीडियो में लिख के दिया है, क्या सब्स्टिट्यूट करना है वो सब वीडियो मैंने सिखाया क्या पुट करना है. सो हियर पुट x is equal to sin थीटा. ये sin थीटा यहाँ पर sin थीटा पुट करो, थीटा फाइंड करके लो. थीटा is equal to what, sin inverse of x.
So therefore y is equal to sin inverse of 2 sin theta under root 1 minus sin square theta. 2 sin theta into cos theta. How it becomes cos theta? 1 minus sin square theta cos square theta. Cos square theta का square root cos theta. 2 sin theta into cos theta, it is sin 2 theta. Sin inverse sin element only 2 theta. Theta is the sin inverse of x. Theta is what? Sin inverse of x. अब इसका differentiation dy by dx 2 as it is. Coefficient है sin inverse x का value 1 upon under root 1 minus x square. It is under root 1 minus x square. ये उसका आंसर बन गया dy by dx. One more. बहुत सारे एग्जांपल की प्रैक्टिस करेंगे आप. Don't worry. अब देखो एग्जांपल नंबर 5 तैयार 4 तैयार. y is equal to cos inverse of 3x minus 4x cube. 3x minus 4x cube. बाहर cos इनवर्स से अंदर cos लाना है. इंपॉर्टेंट क्या पुट करना है यहाँ पर cos थीटा ही पुट करेंगे कि sin थीटा पुट करेंगे. sin थीटा पुट करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ व्हाट 3 sin थीटा minus 4 sin क्यूब थीटा. cos करके जुड़ेगा क्या? नहीं. पार्ट cos 3 थीटा का फार्मूला क्या है? 4 cos क्यूब थीटा minus 3 cos थीटा. तो यहाँ पर वो सूट नहीं होगा. सो बेस्ट में यहाँ पर पुट करेंगे x is equal to sin थीटा. ये जजमेंट गलत है. कौन सा? बाहर cos इनवर्स से तो cos पुट करेंगे, बाहर sin इनवर्स से तो sin पुट करेंगे, बाहर tan इनवर्स तो tan पुट करेंगे, बाहर cos इनवर्स से तो cos पुट करेंगे. ये जजमेंट रॉन्ग है. सब्स्टिट्यूशन टोटली डिपेंड्स ऑन द फार्मूले. ये कौन सा फार्मूला यहाँ पर सैटिस्फाई होता है वही चीज आपको पुट करना है. सो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स x बन गया. y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 3 sin theta minus 4 sin cube theta. This is a sin 3 theta. अब देखो यहाँ पर बाहर cos इनवर्स है, आप क्या आ गए? sin आ गए. sin को cos में कन्वर्ट कर सकते हैं by using allied angle formula. So what is that allied angle formula? We can convert sin cos pi by 2 minus 3 theta. Pi by 2 minus 3 theta. Okay. So this is equal to cos inverse cos cancel. It is pi by 2 minus 3 theta. Pi by 2 minus 3 into cos sin inverse x. अब इसका डिफरेंशिएशन dy by dx. pi by 2 का डेरिवेटिव कितना है? 0 है. What is the derivative of sin inverse x? 1 upon under root 1 minus x square. So what will be the answer? Minus 3 upon under root 1 minus x square. अब ये चार एग्जांपल हुए on the same way of that substitution. Now next one more 4 examples on the same. ये सबसे बड़ी आइडिया क्लियर होना चाहिए कि क्या पुट करना है. व्हाट इज टू बी सब्स्टिट्यूट. हमें यहाँ पर क्या पुट करना है. अगर ये आइडिया आपकी डेवलप हो गई, एक कांसेप्ट क्लियर हो गया, तो दिस एग्जांपल बिकम्स टू मच इजी. थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल लेंगे. थोड़ा डिफरेंट मींस नॉट इजी टू अंडरस्टैंड. cos इनवर्स ऑफ e raised to x minus e raised to minus x डिवाइडेड बाय दूसरा पुट करेंगे. इसके बाद लेंगे sin इनवर्स ऑफ 4 raised to x plus half डिवाइडेड बाय 1 plus 2 raised to 4x. 1 plus 2 raised to 4x. सो देखो यहाँ पर तो डायरेक्ट कोई टर्म नहीं, जैसे लास्ट में x सब जगह पे x था, यहाँ पर x नहीं, थोड़ा डिफरेंट फंक्शन है. Not variable. That was variable. 4 raised to x into 4 raised to half divided by 1 plus 2 raised to x whole square whole raised to 4. 4 into x is 4x.
नाउ देखो साइन इनवर्स एक्स 4s टू हाफ कितना होता है 2 होता है 1 प्लस 2 है। अब इसको क्या करेंगे 2 स्क्वायर होल स्क्वायर करेंगे 2 स्क्वायर होल स्क्वायर 2 स्क्वायर कितना है 4s और ये उसका स्क्वायर 2 स्क्वायर इज 4 अब उसका स्क्वायर दिस इक्वल साइन इनवर्स ऑफ 2 into 4s अपॉन 1 plus 4s स्क्वायर। नाउ यहाँ पर ये टर्म क्लियरली आइडेंटिफाइड है व्हाट अगर हम यहाँ पर 4s की जगह पर tan थीटा पुट करेंगे that becomes 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. So no doubt here put x 4s is equal to tan theta. So immediately find out theta. So theta is tan inverse of 4s. So what will be that example? Sin inverse of 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. अब ये फॉर्मूला साइन का मल्टीपल एंगल का सेकंड फॉर्मूला। सो y is equal to sin inverse of sin 2 theta. Sin inverse of sin 2 theta. Sin inverse sin element 2 theta. What is theta? Sin inverse of tan inverse of 4s to x. Tan inverse of 4s to x. Now differentiate with respect to x. यहाँ पर एक लाइन लिखो आप differentiate with respect to x. Y is equal to 2 dy dx of tan 4s to x because 2 is a coefficient taking outside the derivative of tan inverse 1 upon tan inverse f of x है यहाँ पर लास्ट फॉर एग्जांपल में स्टैंडर्ड फंक्शन था ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स का अभी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन है यहाँ पर tan इनवर्स f of x है व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स f of x 1 upon 1 plus f of x का स्क्वायर into f dash of x derivative of f of x this is equal to 2 upon 1 plus 4 square 2 raised to ये 4 को 4x to x को 2 raised to 2x करो का होल स्क्वायर जैसे एग्जांपल में देंगे वैसे लाने की ट्राई करेंगे हम 4 is a 2 square 2 raised to 2x whole square what is the derivative of 4 raised to x that is 4 raised to x into log 4 this is 2 ये 2 को क्या करेंगे हम 2 is a 4 raised to half 4 raised to x into log 4 divided by 1 plus a 2 raised to 2x it is we can write here 2 raised to x 2 raised to 4x करेंगे जो एग्जांपल में 2 raised to 4x दिया है हमने ये 4x कैसे बन गया 2 into 2 4 पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है that is law of power analysis so now finally 4 raised to x plus half into log 4 divided by 1 plus 2 raised to 4x का स्क्वायर ये उसका फाइनल dy by dt इट्स टू मच सिंपलीफाइड सॉल्यूशन जितना पॉसिबल है उतना सॉल्व करो क्योंकि हमें आंसर तो लाना है लेकिन उसको सीईटी ओरिएंटेड लाना है अगर ये एग्जांपल सीईटी में आ रहा है तो उसका ऑप्शन डेफिनेटली यही रहेगा ये उसका आंसर है that's why I tried to getting the more simplified solution so we'll get this okay now next जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये परफेक्ट हो जाएगा हम क्लास में याद कर लेंगे y is equal to sin inverse of 1 minus 25x square divided by 1 plus 25x square 1 minus 25x square divided by 1 plus 25x square अब इसको देख के आपको समझ में आना चाहिए क्या करना है देखो 25 is a 5 square 5 square है 5 raised to x का स्क्वायर 1 plus 5x whole square
ब्रैकेट का स्क्वायर किया उसको 1 minus 5x whole square 1 plus 5x whole square. Now here put x is equal to 5x is equal to tan theta. यहाँ पर क्या पुट करेंगे? This 5x is equal to tan theta. Why? 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. यही मल्टीपल एंगल फॉर्मूला. इसकी जगह पर दूसरी कोई भी टर्म हम पुट नहीं कर सकते. साइन भी नहीं, cos भी नहीं, और नेवर sec and cosec. Only 5x is equal to tan theta. So this theta is equal to tan inverse of 5 raised to x. Now example becomes y is equal to sin inverse of 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta. This is a multiple angle formula. 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. It is a cos 2 theta. But हमें चाहिए तो sin आ गया cos. But we can convert cos in terms of sin by using a right angle formula. Cos 2 theta is sin pi by 2 minus 2 theta. Now sin inverse sin cancel, our target is over here. Pi by 2 minus 2 theta. But actual theta is what? Tan inverse of 5x. Here theta is equal to what? Tan inverse of 5x. This is why. So यहाँ पर ये जो सब एग्जाम्पल इसमें इम्पोर्टेंट डेरिवेटिव नहीं है, इम्पोर्टेंट क्या है? ये ट्रिगोनोमेट्री. व्हाट इज टू बी सब्स्टिट्यूट, क्या पुट करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस आर्टिकल में. फाइनली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x. राइट दिस लाइन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. y is equal to the derivative of pi by 2 is 0 to d by dx of tan inverse of 5x minus 2. What is the derivative of tan inverse 5x? 1 upon 1 plus 5x का square into d by dx of 5x. Because tan inverse 5x is not a standard function, it is a composite function, function of another function. Now it is minus 2, 5x का derivative 5, 1 plus 25 x square. 5 का square 25. The final answer is minus 10 upon 1 plus 25 x square. ये उसका डेरिवेटिव. प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली आपको ये क्या पुट करने समझ में डेफिनेटली आएगा. तो मैंने इसके पहले जो वीडियो लेक्चर लिया है वहां पर मैंने आपको एक टेबल लिख के दिया, द स्पेशल और सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट एग्जांपल, और सारे एग्जांपल लेंगे, डोंट वरी. अब we are tan inverse of 2x raised to 5 by 2 divided by 1 minus x raised to 5. अब एक तो क्लियर टर्म है, वो कौन सी क्लियर टर्म है? बाहर tan इनवर्स है तो अंदर भी क्या आना चाहिए? आइदर tan ला लो नहीं तो फिर क्वाड भी चलेगा. ओके, आगे इधर तो क्लियर है 1 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. ये फॉर्मूला यहाँ पर सैटिस्फाई होता है, देख के ही समझ में आता है. थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. tan इनवर्स ऑफ 2 into x raised to 5 by 2 1 minus x raised to 5 by 2 का स्क्वायर. थोड़ा चेंज कर, x raised to 5 को क्या किया? x raised to 5 by 2 का स्क्वायर. दिस 2 और दिस 2 कैंसिल हो जाएगा, यही बन गया. थोड़ा एडजस्टमेंट किया सिर्फ. नाउ ये जो टर्म आइडेंटिफाइड है वहां पर पुट करेंगे tan थीटा. x raised to 5 by 2 is equal to tan थीटा पुट करो, थीटा बन जाएगा tan inverse of x raised to 5 by 2. Now example becomes y is equal to tan inverse of 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. And this is a tan 2 theta. Tan inverse tan eliminate, only 2 theta. But actually what is theta? Theta is this.
2 into tan inverse of x raised to 5 by 2 into tan inverse of x raised to 5 by 2. नाउ हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे. डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं हम अब नहीं करते. क्यों? ये सब्स्टिट्यूशन से इजी बन जाता है. तो अब इसको हम डिफरेंशिएट करना बहुत इजी जाएगा. नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx. 2 into what is the derivative of tan inverse f of x? 1 upon f of x का square into d by dx of f of x. 1 upon 1 plus f of x का square into f dash of x. This is 2 upon 1 plus x raised to 5. X raised to 5 and 2 and this 2 cancel. How it is cancelled? देखो left side. X raised to 5 by 2 into 2. ये 2 और ये 2 cancel. X raised to 5. The laws of power and indices. Now x raised to n का derivative n into x raised to n minus 1. This 2 and this 2 cancel. 5 into x raised to 3 by 2 upon 1 plus x raised to 5. ये उसका dy by dx. Okay? अब next example. Sin inverse of 1 minus x cube upon 1 plus x. ये बाहर. अब देखो बाहर साइन इनवर्स से अंदर एक तो साइन ला सकते हो, देखो नहीं तो कॉस लाने तो भी चलेगा. कॉस लाना इजी है. 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. आज हमने 2-3 बार इस पर एग्जांपल लिए. तो लाना इजी है, बट यहाँ पर क्यूब है, स्क्वायर नहीं. x क्यूब को हम स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करते हैं देखो. ये देखो sin इनवर्स ऑफ 1 माइनस x raised to 3 by 2 का स्क्वायर 1 प्लस x raised to 3 by 2 का स्क्वायर. जैसे सेम यहाँ पर जो कंसेप्ट अप्लाई किया वही उधर कंसेप्ट अप्लाई किया. वहां पर क्यूब था, हमने उसको स्क्वायर में कन्वर्ट किया. x raised to 3 by 2 का स्क्वायर, x raised to 3 by 2 का स्क्वायर, that is x cube. Now this term, identifying term, put there tan theta. Put x raised to 3 by 2 is equal to tan theta. So obviously theta is equal to tan inverse of x raised to 3 by 2. Now this example becomes y is equal to sin inverse of 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta. And now this becomes a multiple angle formula. Sin inverse of cos 2 theta 1 minus tan square theta 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta is cos 2 theta. This is the sin inverse of sin pi by 2 minus 2 theta. Pi by 2 minus 2 theta. Sin inverse sin cancel, only pi by 2 minus 2 theta. So therefore y is equal to, what is theta? Theta is tan inverse of x raised to 3 by 2. Now इसका डिफरेंशिएशन जो हमने लास्ट टाइम किया वही, ये थोड़ा स्टार्ट में डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है, ये भी एग्जांपल डिफरेंट है. तो इतना जजमेंट आपको आना चाहिए, बस बाकी तो रेगुलर प्रोसीजर है सो डिफरेंशिएट करने की. अब देखो पाई बाय 2 का 0 2 tan इनवर्स f of x का 1 upon f of x का स्क्वायर into d by dx of f of x x raised to 3 by 2. This is equal to minus 2 divided by 1 plus x cube. Minus 2 divided by 1 plus x cube. इसका डिफरेंशिएशन 3 by 2 into x raised to 3 by 2 minus 1. ये 2 और ये 2 cancel. Minus 3 into x raised to half divided by 1 plus x cube. ये उसका आंसर dy by dx.
ये पूरे सब एग्जांपल्स किस पर है? सब्स्टिट्यूशन पर डिपेंड है। ओके, तो एक 8-10 एग्जांपल 7-8 एग्जांपल मिलेंगे और ऐसे कुछ एग्जांपल सॉल्व भी है, अनसॉल्व भी है, आप ट्राई करके देखो। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम डाउट आ रहा है तो दिक्कत मुझे कोई भी नीचे आप उसको मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। ओके, सो नाउ आगे विल टेक सम एग्जांपल्स। तो सब्स्टिट्यूशन नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। इनवर्स के एग्जांपल, ये टॉपिक का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये पहला एग्जांपल, y is equal to tan inverse 8x divided by 1 minus 15x square। अब इस एग्जांपल में हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, because substitution is completely failure here. We can't substitute any term replacing that. So here just recall the properties of tan inverse. Tan inverse x plus y divided by 1 minus x into y is equal to tan inverse x plus tan inverse y. The special property of tan inverse minus और यहाँ पर प्लस रहा तो that becomes tan inverse x minus tan inverse y। ये प्रॉपर्टी पर एक 4-5 एग्जांपल लेंगे हम। तो पहला एग्जांपल, tan inverse 8x upon 1 minus 15x square। सो नीचे माइनस है, यहाँ ऊपर क्या आना चाहिए? प्लस आना चाहिए। तो प्रॉपर्टी सैटिस्फाई हो जाएगी। देखो कैसे लाते हैं इसको। ऐसे दो नंबर जिसका प्रोडक्ट 15x को आना चाहिए, उसका सम 8x आना चाहिए। प्रोडक्ट 15x square, sum 8x। What are that number? 3x and 5x। 3x plus 5x 8x and 3x into 5x 15x square। Now this example definitely belongs to that property, tan inverse x plus y upon 1 minus x into y। सो हियर सिर्फ इतना चेक करना है, नीचे अगर माइनस साइन रहा तो ऊपर क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। सम ऑफ टू टर्म्स, नीचे प्लस आए तो ऊपर डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स आना चाहिए। सो ये लॉजिक है उसके पीछे। tan inverse 3x plus tan inverse 5x, दिस इज y। अब इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक सिंगल स्टेप में आ जाएगा। दिस इज dy by dx, tan inverse f of x 1 plus f of x square into f dash of x plus 1 plus f of x square into f dash of x। What is the value of 3x? 3, 1 plus 9x square, 5, 1 plus 25x square। This is dy by dx। Is it clear? अब ये सेम प्रॉपर्टी का 2-3 एग्जांपल लेंगे। देखो नंबर सेकंड, y is equal to cot inverse 1 plus 35x square divided by 2x। So immediately what we have to do here? Taking reciprocal of that cot inverse, so that becomes tan inverse of property 2x upon 1 plus 35x square, 2x upon 1 plus 35x square। so क्या करेंगे? 7x में नीचे प्लस ऊपर क्या आना चाहिए? माइनस आना चाहिए। so ऐसे दो नंबर देखो कौन से, उसका डिफरेंस 2x आना चाहिए, उसका मल्टीप्लिकेशन 35x को आना चाहिए। डिफरेंस 2x, मल्टीप्लिकेशन 35x square। what are that? obviously 7x minus 5x, 1 plus 7x into 5x। इनका डिफरेंस 2x, इनका प्रोडक्ट 35x है। नाउ tan inverse x minus y upon 1 plus x into y
tan inverse 7x minus tan inverse 5x. What is answer here? dy by dx. For direct लिखता हूँ मैं डेरिवेटिव 1 plus 49x square 7x का into 7 1 plus 25x square 5x का डेरिवेटिव 5 ये उसका आंसर. हर एक एग्जांपल में डेरिवेटिव एक ही स्टेप का है. Important this trigonometry. You have to convert the example into properties and formulas of inverse trigonometric function. Number next. Example number third on the same. Y is equal to tan inverse of 2 root x 1 plus 3x 2 root x upon 1 plus 3x. अब सेम लॉजिक, नीचे प्लस है ऊपर क्या आना चाहिए माइनस. तो कैसे ला सकते उसको. ऐसे दो नंबर देखो कौन सा है जिसका डिफरेंस 2 root x है, जिसका प्रोडक्ट 3x है. व्हाट आर दैट नंबर? tan inverse 3 root x minus root x 1 plus 3 root x into root x. Same, no change. 3 root x minus root x 2 root x 3 root x into root x 3x. Now it becomes direct apply the property tan inverse of 3 root x minus tan inverse of root x. Differentiate with respect to x. थोड़ा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो. इसका डिफरेंशिएशन कैसा आएगा? 1 upon 1 plus 3 root x का स्क्वायर into d by dx of 3 root x minus 1 upon 1 plus root x का स्क्वायर into d by dx of root x. So this is equal to 1 upon 1 plus 9x 3 root x का 3 upon 2 root x 1 upon 1 plus x 1 upon 2 root x. डेरिवेटिव ऑफ root x 1 by 2 root x. अब यहाँ से हम 1 by 2 root x कॉमन भी निकाल सकते हैं. ये तो सिंपलीफाइड स्टेप है. 1 by 2 root x कॉमन 3 upon 1 plus 9x minus 1 upon 1 plus x. ये उसका dy by dx. सेम टाइप के तीन एग्जांपल हो गए. सेम पैटर्न पे तीन एग्जांपल. लास्ट को एग्जांपल लेंगे इसका. वैसे बहुत सारे एग्जांपल हैं. y is equal to tan inverse 2 into 2 raised to x plus 2 divided by 1 minus 3 into 4 raised to x. 3 into 4 raised to x. अब देखो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं tan inverse of 2 raised to x into 2 square divided by 1 minus 3 times 2 raised to x का square. 2 का square 4 4 times 2 into 4 times 2 raised to x upon 1 minus 3 into 2 raised to x का square. नीचे माइनस साइन ऊपर क्या आना चाहिए प्लस. अब देखो प्लस कैसे ला सकते हैं 4 into 2 raised to x upon 1 minus 3 into 2 raised to x का square. What will be that number? 3 into 2 raised to x plus 1 into 2 raised to x divided by 1 minus 3 into 2 raised to x का square. ये वो दो नंबर है 3 into 2 raised to x and 2 raised to x. इसका सम 4 into 2 raised to x. इनका प्रोडक्ट 3 into 2 raised to x का स्क्वायर है. इंपॉर्टेंट. ये एडजस्ट में आना चाहिए. लॉजिक समझ में आना चाहिए. Now finally this becomes tan inverse of 3 into 2 raised to x plus tan inverse of 2 raised to x. Tan
tan inverse x plus y upon 1 minus x into y. X into y divided by y dy by dx 1 upon 1 plus इसका स्क्वायर 3 into 2 raised to x का स्क्वायर into d by dx of 3 into 2 raised to x plus 1 upon 1 plus 2 raised to x का स्क्वायर into d by dx of 2 raised to x. Tan inverse f of x 1 upon f of x का स्क्वायर 1 upon 1 plus f of x का स्क्वायर into f dash of x. Same. This is equal to देखो 1 plus 3 का स्क्वायर 9 4 raised to x 3 2 raised to x into log plus 1 upon 1 plus 4 raised to x 2 raised to x into log. The derivative of 2 raised to x 2 raised to x into log. Taking 2 raised to x into log 2 common in bracket 3 upon 1 plus 9 into 4 raised to x plus 1 upon 1 plus 4 raised to x. ये उसका आंसर dy by dx. इंपॉर्टेंट इसको कन्वर्ट करना है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कंप्लीटली फेल्योर है। हम यहाँ पर कोई भी टर्म पुट नहीं कर सकते। पुट करके ट्राई करके देखो, पुट करके एग्जांपल सॉल्व नहीं हो सकता, सब्स्टिट्यूट करके एग्जांपल सॉल्व नहीं होता। तो जो दो प्रॉपर्टी है वो स्पेशली सिर्फ किसके लिए है, वो tan इनवर्स के लिए है। सो tan इनवर्स का एग्जांपल सपोज एग्जाम में आया तो दोनों भी चीज आपके दिमाग में आना चाहिए, एक तो सब्स्टिट्यूशन एंड सेकंड दैट फॉर्म। ओके, सो ओनली फॉर tan इनवर्स। ओके, नाउ डिफरेंट एग्जाम्पल नंबर 5 इसमें का tan इनवर्स ऑफ 5 minus x divided by 6x square minus 5x minus 3 तो कंप्लीटली डिफरेंट है। सब्स्टिट्यूशन के लिए तो थोड़ा भी चांस नहीं है और उस प्रॉपर्टी में कन्वर्ट फॉर्मूला में कन्वर्ट करना भी इतना इजी नहीं है। सबसे यहाँ पर एक जजमेंट, यहाँ पर एक लॉजिक अप्लाई करना है, क्योंकि लर्न करके नहीं जाना उसको। क्वाड्रेटिक टर्म पॉजिटिव है, यहाँ पर 1 प्लस लिखता हूँ 1 प्लस 6x square minus 5x 1 minus 4 1 minus 4 कितना है minus 3। This equal to tan inverse of 5 minus x। यहाँ पर 1 प्लस प्लस क्यों लिया, क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है। अगर क्वाड्रेटिक निगेटिव रहेगी तो यहाँ पर क्या लेंगे हम 1 माइनस लेंगे, निगेटिव टर्म को पॉजिटिव कर सकते हैं। अब इस क्वाड्रेटिक का साइड में फैक्टर फाइंड करो, ये रिमूव करना है। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन? रफ कैलकुलेशन 6x square minus 5x minus 4 6 4s are 24 minus 24 so 8 3s are minus 8x plus 3x 8 3s are 24 6 4s are 24 2x कॉमन लेंगे 3x minus 4 plus 1 common लेंगे 3x minus 4. This is the first factor 3x minus 4. What is second factor? 2x plus 1. So write these two factors in directly. This is 3x minus 4 and second is 2x plus 1. अब इन दोनों फैक्टर का डिफरेंस ये आना चाहिए, फिक्स आता है। यहाँ पर समय ऊपर क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। So this is y is equal to tan inverse of 3x this minus this करेंगे क्या, this minus this करेंगे, this minus this करेंगे। why 2x minus 3x कितना है minus 6। so ऊपर लिखो 2x plus 1 minus 3x minus 4। ये दोनों का डिफरेंस ये है, देखो 2x minus 3x minus x 1 minus into minus plus 4 plus 5। ये स्टेप और ये एग्जांपल सेम है, सिर्फ हमने क्या किया उसको कन्वर्ट किया।
ऐसे दो फैक्टर जिसका प्रोडक्ट जितना आता है, जिसका डिफरेंस 5 माइनस एक्स आना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक। पहले यहाँ पर 1 प्लस क्यों किया, 1 माइनस क्यों नहीं किया, ये क्वाड्रेटिक टर्म कैसे ही पॉजिटिव, सो प्लस। अगर क्वाड्रेटिक टर्म नेगेटिव रहेंगे तो 1 माइनस, नीचे प्लस ऊपर डिफरेंस आना चाहिए, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए। नाउ दिस प्रॉपर्टी इज व्हाट, tan inverse x minus y upon 1 plus x into y. This is y is equal to tan inverse of 2x plus 1 tan inverse of 3x minus 4. अब इसका डिफरेंशिएशन dy by dx 1 upon 1 plus 2x plus 1 का स्क्वायर into 2 इसका डेरिवेटिव 1 upon 1 plus 3x minus 4 का स्क्वायर into 3। अब ये 2 upon 1 plus 4x square plus 4x plus 1 plus 9x square minus 24x plus 16। 3 4s are 12, 12 2s are 24, 3 square 9, 4 square 16। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, 4x square plus 4x plus 2, 1 plus 1 2, 3 divided by 9x square minus 24x plus 70, ये उसका आंसर dy by dx। थोड़ा डिफरेंट है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है डेरिवेटिव के एग्जांपल, नो डाउट बाहर tan इनवर्स 8 tan आना चाहिए, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं, बहुत लेंदी है, सब्स्टिट्यूशन कंप्लीटली फेल्योर है। उसके बाद आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, एग्जांपल tan इनवर्स का, ये प्रॉपर्टी में हाउ कन्वर्ट करना है, प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करना है तो x plus y upon 1 plus x into y और x minus y upon 1 plus x into y इस फॉर्म में लाना है। सो 1 यहाँ पर ये कॉर्नर में 1 होना ही चाहिए, तो 1 आइदर 1 प्लस और 1 माइनस। सो प्लस क्यों किया, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक टर्म पॉजिटिव है। इसमें और एक लास्ट एग्जांपल है वो हम कंप्लीट करेंगे। देखो y is equal to cot inverse of 4 minus x minus 2x square divided by 3x plus 2। अब एग्जांपल है cot इनवर्स है, इमीडिएटली उसको क्या करो, tan इनवर्स में कन्वर्ट करो, रेसिप्रोकल को प्रॉपर्टी tan इनवर्स ऑफ 3x plus 2 4 minus x minus 2x 3x plus 2, यहाँ पर माइनस 2x स्क्वायर निगेटिव है, तो यहाँ पर क्या करो 1 माइनस 2, ये 2x स्क्वायर माइनस x का प्लस x 4 आना चाहिए, तो यहाँ पर कितना है माइनस 3, 5 माइनस 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3, 3 प्लस 1 कितना है 4, माइनस 2x स्क्वायर माइनस x से। नाउ immediately find out the factors of this quadratic equation factor। ये 3 to the 6 है, साइड में कॉर्नर में देखो रफ कैलकुलेशन 3 to the 6, सो इसको 3x minus 2x करेंगे प्लस 3x minus 2x minus 3, x कॉमन 2x plus 3, 1 minus 1 कॉमन 2x plus 3। What is the first factor? 2x plus 3. Second factor x minus 1। Got it? Now ये तो प्रोडक्ट आया, अब इसका सम ये आना चाहिए, डेफिनेटली आता है 2x plus x 3x 3 minus 1 plus 2। ऊपर सम क्यों, बिकॉज नीचे क्या है माइनस साइन। सो बेस्ट वे हियर राइट tan इनवर्स ऑफ 2x plus 3 plus x minus 1, 1 minus 2x plus 3 x minus 1। Okay, now this is a tan inverse x plus y upon 1 minus x into y।
So directly mention here tan inverse of 2x plus 3 plus tan inverse of x minus 1. इसका आप डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं जैसे लास्ट में हमने किया है. So this is a complete derivatives of inverse trigonometric function. ये सेकंड आर्टिकल यहाँ पे कंप्लीट होता है. नियर अबाउट 80% से भी ऊपर मैंने एग्जांपल लिया है. ये पूरा रिपीट करके वीडियो लेक्चर रिवाइंड करके देखो. जो भी न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आया वो रिपीट देखो, पॉज करके देखो, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा. और ये टेक्स्ट बुक में कुछ एग्जांपल सॉल्व है वो भी कॉपी करो, और जो कुछ बचे एग्जांपल्स है वो ट्राई करो, और इसमें कोई डाउट आया तो डेफिनेटली मुझे शेयर करो. ओके, सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर. और नेक्स्ट डे वी विल टेक द नेक्स्ट फ्रेश article of derivatives of some parametric or implicit function. Now we'll stop here. Thank you very much.